अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने एक बहुत ख़ास मेहमान को दावत दी है कि वो हमारे साथ बातचीत करें। In these quarantine days, what we miss most is our friends, and one of my very dear friends is going to join me today. He needs no introduction. He's one of our bright young film stars, and he's also a producer. Shahryar Munawwar, thank you for joining me today. मैं आपसे पूछना चाहती थी, what attracts you towards acting, and what attracts you towards production? Acting, just the idea of being able to do new things all the time. That's what got me to it. You can, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर, बचपन से वो बच्चों से पूछा जाता था क्या बड़े होके क्या बनेंगे, तो कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा. सो मुझे सब कुछ बनना था. तो मैं एक्टर बन गया. अब मैं कभी डॉक्टर बनता हूँ, कभी इंजीनियर बनता हूँ, कभी फिजिसिस्ट बनता हूँ, कभी लवर बनता हूँ. बहुत सही कह रहे हो आप. रोज नए नए शख्स बनने का मौका मिलता है. you're not from the film industry. आप किसी एक्टर के बेटे नहीं, आप कोई ऐसी फैमिली नहीं कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा हो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड. सो आपकी फैमिली में कोई एक्टर प्रोड्यूसर नहीं. Yeah. You chose कि मुझे प्रोडक्शन करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है. Just the idea of being able to create content. People have a misconception about producers. People feel that being a producer, you're just handling the money for the project. That's not true, because a producer picks up the script all the way from the script के पहले एक आइडिया आता है कि ये आइडिया इस पे फिल्म बनानी है, फिर वो राइटर के पास जाता है, फिर वो स्टोरी लिखवाता है, फिर उस स्टोरी पे काम करता है राइटर के साथ आगे पीछे. जब वो स्टोरी लॉक इन हो जाती है, व्हेन ही इज हैप्पी विद इट, तो उसके बाद फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है, वो डायरेक्टर को पिच करता है वो स्टोरी पे, वो डायरेक्टर को हायर करता है, उसके बाद फिर उसकी कास्टिंग करता है, उसके बाद फिर वो उसके सेट्स लगवाता है या फिर लोकेशंस रेकी करता है, लोकेशन सेट. सो एसेंशियली फिल्म इज अ प्रोड्यूसर्स फिल्म, बिकॉज वो उसका बेबी होता है. पूरी टीम ही पुट्स टुगेदर. My father is a producer as well. So उन्होंने दोस्ती प्रोड्यूस की, ही रांझा प्रोड्यूस की. तो although ही रांझा में भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर का म्यूजिक, मेरी माँ ने गाए गाने, he was the hero, but he put the entire team together. सारा म्यूजिक किस तरह उन्होंने बनवाया ख्वाजा साहब के साथ बैठकर. वो बताते थे कि ख्वाजा साहब जो है ना, वो माचिस की डिब्बी के ऊपर टक टक बजाकर रात भर बैठ के ये लोग ऐसे म्यूजिक बनाते थे. So they made such beautiful melodies together. I know how important a producer is, and how everything it's a together. thread that. So it's just the feeling of creating something. It's as if I think it's an amazing way of आपके जो artistic desires हैं उनको fulfill करने का बेहतरीन तरीका है, because आप क्रॉस क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन काम कर रहे होते हैं when you're getting, and it's one way of getting experience with everything, because आपको म्यूजिक की समझ हो जाती है, आपको होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते म्यूजिक. So you work with musicians from everything. So that's the most amazing, that's why filmmaking is the most amazing art, because वो cross discipline है ना, उसमें म्यूजिक भी आ जाता है, उसमें परफॉर्मेंस भी आ जाती है. So being a producer, you get exposed to all of that. Essentially, when you're done with the film, it's as if it's given birth. So That's so true. Yeah, and I know it's your baby. You work so hard, you put years of your life into it. Yeah, and you've had a chance to work with the brilliant Asim Raza. इससे बेहतर इंसान के साथ आप काम नहीं कर सकते. इतना ज़्यादा सीखते. I've produced 2 films. I've produced 2 films that he's directed. I've acted in those films. I know. आसिम तो ऐसे ही कि उनके पास 2 मिनट बैठ के इंसान इतना सीखता है, और आपने तो 2 फिल्में उनके साथ की हैं as actor and producer. I wanted to ask you that what is the biggest misconception about fame? अब आपको इतनी जो शोहरत मिली है, तो आपके ख्याल में what is the biggest misconception? That it makes you happy. I think a lot of people have these goals, and I was having a discussion with my brother the other day. People have misconstrued assumptions, and उनके goals होते हैं कि मैंने famous होना है या मुझे बहुत सारे पैसे बनाने हैं, so it doesn't get you happiness, not at all. I think I've realized when I was young, I wanted to be very famous. I think everybody does.
But once you starts coming, you realize that there's no correlation between fame and happiness. Happiness has to come from within, and it can come from the most simple, basic of things. So I think that was my biggest misconception about it, that setting fame as a goal is a wrong goal in itself. आपने अभी इतनी प्रोफाउंड बात की है. लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है, वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझती. सारी उम्र भागते फिरते हैं पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे. और आपने तो बिल्कुल, my mother would have said बुद्धि रूप. Very wise, very profound what you just said. आपके काम में आपको इतनी खूबसूरत जगह जाने को मिलता है. Can you tell me what has been your most rewarding trip? I feel I've been lucky enough to travel a lot of places around the world, but ये बिल्कुल क्लीशे जवाब नहीं है. Again आप कहेंगी कि मैं बुद्धि रूप हूँ, but honestly I've realized that it's not the places, it's the people you travel with that make places very interesting. I mean, some of my one of my most favorite trips has been in Pakistan, which is beautiful, to be honest. But it's been a trip up north, and it was with my family, and we drove all the way from Karachi all the way to Shogran, and just that drive, was amazing. Is beautiful. So पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन घूमने के बाद ये पता चला कि कोई जगह से चीज टाइम स्पेशल नहीं बनता, लोगों से बनता है. Such a profound thing again आप अपनी उम्र से इतनी बड़ी बातें करते हो. Who are you closest to? I'm very close to my father. I'm very, very close to my little brother. I think the closest I would say, it's very different because my little brother and myself were like best friends. So we're friends. So we're close like that. But I share a different kind of bond with my mother and my father. अगर आप अपने काम में, who would be your dream co-star? If you could name anybody in the world जिसके साथ आप काम करना चाहो, भले यहाँ के हो या anyone that you would like to work with, someone your dream cast, who would you like to work with? Well, it depends. अगर मतलब कोई अगर मुझे कोई रोमांटिक रोल प्ले करना है तो जूलिया रॉबर्ट्स के साथ I'd love to work. जूलिया रॉबर्ट्स. अगर कोई क्राइम फिल्म करनी है, मुझे क्राइम फिल्म भी नहीं, but I would say like a drama or something, I'd love to work with Marlon Brando. We're saying it could be anyone, but dead or alive, right? Yeah. मैं इसलिए भी पूछी थी that sometimes when we have these big dreams, it's good to just voice them. It's good to just put it out there into the universe. And God knows कब घूम फिर के some of those things come true. So Shehar, if you weren't acting or producing, what would you have liked to have done with your life? अब क्या कर रहे होते अभी अगर आप acting production नहीं करते? I would like to have a travelogue. That's really interesting. I didn't know that about you. That's really interesting. तो शायद आपको I'd like to have a travelogue and I'd like to do adventure traveling. Yeah, maybe you should do that anyway. शायद आपको वैसे ही करना चाहिए फिल्मों के साथ ये भी. So is there any song that you are humming these days? Any song that's just sort of stuck in your head? It's गुलों में रंग भरे, अली सेठी की आवाज में, from Coke Studio. Obviously मेहदी हसन साहब ने गाया था, ये की गजल थी, लेकिन I think if somebody's done justice to it, it's Ali. And it's always stuck in my head and it's always on my playlist. It's on repeat in my car. मेरे साथ तो है, but मेरे दोस्त और मेरे घर वाले अगर अली से मिले तो उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतना चलाया है. Recently we drove दादू गए थे हम लोग, दादू से थोड़ा सा आगे गए थे. We keep taking these trips. ये क्वारंटीन से पहले की बात है. So जब हम गए थे तो that one song I played, I think, a million times in the car, again and again. So I think it's beautifully sung, and so it has to be that. तो बस वो जो फैज साहब ने शायरी लिखी थी कागज पे, उसकी विजुअलाइजेशन है वो आप ही हैं. कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, बाद नौ बहार बन के आप अपने कैनवस पे रंग भरती हुई जाती हैं.
आप ऐसे बातें करोगे तो मैं तो रोज फोन कर लिया करूंगी आपको कि मेरे साथ बातचीत करें. I wanted to ask you कि आपकी सुबह की रूटीन क्या है? आप कैसे सुबह का आगाज करते हो? I don't remember where I read this, but वो कहते हैं कि for anything to become a habit, you have to do it for at least 30 days. So ये क्वारंटीन में पिछले 30-40 दिन जो है 40 से तो ऊपर ही हो गए, अभी 50 के करीब हो गए. I've been doing this every day, and now slowly and gradually it's become a habit, and I can see it's really improved my life, because what happens is कि सुबह सुबह उठ के जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो that gets the blood flowing in my body, तो मैं एक्टिव हो जाता हूँ. Absolutely. आपकी जो है वो endorphins रिलीज होते हैं जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, तो they make you happy, and right after that आप जब आप मेडिटेशन करते हो तो you know it sort of wakes your brain up. आपका जो क्लटर पूरी रात का हुआ होता है, आप थोड़े से फॉगी, वो कहते हैं ना उसको फॉग ब्रेन फॉग होता है आपका, वो दूर हो जाता है अचानक से. तो right after that when I read, I can't do it for 20 minutes because I can't limit myself. तो जितना अखबार मैं पढ़ रहा होता हूँ, जितना इंटरेस्ट लेवल होता है, तो वो कभी कभार 30, 35, 40 मिनट हो जाते हैं. So I do that, तो उससे फिर आपका दिमाग फिर एक्टिव हो जाता है. And by doing these three things, you've essentially prepared your entire body, your mind, your body, to be active and ready for the entire day. That's So, true. and be productive. Yeah. Be So, productive. Because your I mind, feel your say body. Meditation has really helped me, not just with usually लोग इसको शुरू करते हैं जब उनको anxiety issues होते हैं, या if they're going through a tough period in life. But to be honest with me, what meditation has allowed me to do is that it's allowed me to be, I feel more creative because it's opened up my mind. My meditation teacher used to say that it's like closing all the extra windows on a computer. Yeah. To allow the machine to be more productive. अच्छा, आपसे एक और बात भी पूछती है. आपका फेवरेट कलर क्या है? मैं आपको इतने अरसे से जानती हूँ कि अभी छोटी छोटी बातें पूछना अजीब लगता है. But I don't know, what is your favorite color? So I like shades of blue, which is very normal कपड़ों में जब मैं करता हूँ. वैसे पर्पल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है. Purple. और women, on women I'd like red. So हाँ. Red. So, लाल nail polish, लाल लिपस्टिक. और आपको खाना किस किस्म का पसंद है? What kind of cuisine is your favorite? To be honest, I like desi food. I love desi food. I mean, I love, मैं गोश्त हो रहा हूँ, so मुझे बलोची खाना, वानी खाना, पेशावर में जो the kind of cuisine you get. So सज्जी हो गई, आपकी नमकीन बोटी हो गई, आपकी कढ़ाई हो गई. It's making my mouth water right now. So I love. मगर आपको मालूम है ना, the kind of journey that you're on, ये आहिस्ता आहिस्ता गोश्त जिंदगी में से निकल जाता है. The more conscious you become of your health and how mindful you become about what you're eating, ये सब निकल जाता है जिंदगी में से. I can cook decently well when I have to cook to survive. I can, but I don't. Otherwise, I'm lucky that way. मुझे घर पे नहीं खाना बनाना पड़ता. But जब बनाना पड़ता है तो मैं बना लेता हूँ और अच्छी तरीके से. अच्छा, can I tell you something interesting? Nazia, what I've done is that इस quarantine के दौरान I've given up on caffeine. So I don't have any coffee anymore. I don't have any tea anymore. Which initially, and it शुरू में मुझे लगा था कि जब मैंने ये decide किया था कि मैं ये करूँगा, तो मुझे लगा था कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा because I was addicted to coffee. I'm a coffee lover. And black coffee. I take my coffee black, and मैं सुबह दोपहर शाम कॉफ़ी मुझे चाहिए होती थी. So I gave that up, and first couple of days were tough, but now I have no caffeine whatsoever. That's fabulous, because I'm a complete caffeine junkie. Yeah. छोड़ना पड़ेगा. Do you want to tell us something about your guilty vice? Your love of I would say वो lucky enough to start earning when I was pretty young, when I was still in A levels. So तब से ही पैसे जमा करके I started collecting watches, and I have a decent collection now. And आपको कहना चाहिए कि मुझे वक्त की कदर है, इसलिए मैं घड़ियां इकट्ठी करता हूँ. वक्त की तो कदर है.
वक्त की कदर करनी चाहिए ताकि वक्त आपकी कदर करे. वक्त ने आपकी कदर करना बंद कर दी तो. How would you describe your own fashion sense, the way you dress? I would call it classic, elegant with bits of experimentation. But I really feel that to be able to bend the rules, you need to know the rules first. Yeah, I love the colors you wear and the waistcoats and all of that. Thank you. But yeah. Coming from an artist like you, it's a big compliment. Because you dress wonderfully well. Thank you. Mine is very classic. I mostly just wear sarees. I like to wear my mother's sarees. You know, जब मैं पहनती हूँ उनकी साड़ियाँ, मुझे लगता है मैंने अपने आप को लपेट लिया है उनकी चीजें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. Oh, that's so sweet. I wanted to ask you some small frivolous questions, if you don't mind. मैं कुछ जुमले कहूँगी, and you try and finish off my sentences. I am in awe of you. No, you have to say I am in awe. Oh my God! I am. Yes. You mean me? I can't stand. I can't stand hypocrisy. I truly believe that if we all believe in Pakistan will be the greatest nation in the world. You know, I fear. I fear. I fear itself. Yeah. There's nothing to fear but fear itself. Fear is it's an energy zapper. Energy zapper. There's nothing to fear but fear itself. I look forward to every day, every morning, with my parents around me. So my best friend is my brother. I'd like to say, yeah. अभी आपने कहा Vicky. I like girls who are confident, self-assured. That's right. I'm attracted to creativity. That's good. Other than your parents, can you tell me one man and woman that you truly admire, someone you look up to, someone who has set an example for you? I mean, it'd be really cliched if I say Asim, because I think he's a thorough gentleman. Yeah, Asim has been human. We can move on. We can move on to the next question. But I'll tell you why. Because I automatically आपके दिमाग में वो filter भी होता है ना कि I don't ये नहीं कहना वो नहीं कहना. मैथ्यू मैकॉले से ये सवाल पूछा था और उसने बड़े मजे का जवाब दिया था. उससे कहा था कि who would you aspire to be? He said me in 10 years. You in 10 years. So अभी जो ये हमारे कोविड के दिन चल रहे हैं, क्वारंटीन के दिन चल रहे हैं, इस सब में आपका क्या ख्याल है? हमने कुछ सीखा है या हम? मैंने तो